Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss an interesting topic, that is nucleic acids. So let's move to the whiteboard. So dear students, nucleic acids. A very important topic, and that is the basic topic. इसकी मज़ीद जो extension है, its chemical nature, you will learn in chapter number 20 in second year. So nucleic acids. तो यहाँ पर हम इसको इसकी basic information के हवाले से आज बात करते हैं. So dear students, nucleic acids. तो कितने nucleic acids हैं? Hopefully, yes, you are right. There are two nucleic acids. DNA and RNA. Here. So these are the abbreviations of, it is the deoxy ribonucleic acid, the DNA, while RNA, it is the ribonucleic acid. Clear? So DNA, basically the hereditary material. Now, their discovery. Who discovered them? So, in 1869, Frederick Meister discovered the nucleic acids from the nuclei of pus cells. Clear? So यहाँ पर important MCQs. Number 1, you should have to memorize this date, 1869. By whom? Frederick Meister. From where? From the nuclei of pus cells. So pus, जिसको हम पीप भी बोलते हैं, a material, a greenish white material that is formed whenever the pathogens, the microorganisms, they enter in our body, and our white blood cells try to beat them up, and in that body action, some white blood cells are dead, and some pathogens, they become dead, forming a whitish green material that is called as pus. Now, why nucleic acids are so called? It's a question, it's a query. कि न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, या फिर इस तरह से भाई व्हाई दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड्स. व्हाई डीएनए और आरएनए वर नेम्ड as nucleic acids. Clear? So the answer is from
isolation and the nuclei, यानी कि कहाँ से आइसोलेट किए गए? न्यूक्लियस से. And due to their acidic nature, they were named nucleic acids. Clear? तो दो चीज़ें, आइसोलेशन कहाँ से हो रही है? न्यूक्लियस से हो रही है, न्यूक्लियस से हो रही है. ठीक है. और फिर इनकी नेचर क्या है? Due to their acidic nature and from the nucleus, they were called as nucleic acids. Clear? Now, the types. So, as far as types are concerned, there are two types of nucleic acids, that is DNA and number 2 RNA. Clear? The deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Clear? Now, their composition, the nucleic acids are the polymers of units called nucleotides. So, nucleic acids are the polymers. Poly means many and mers mean units. बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर, और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इन डीएनए or DNA consists of deoxyribonucleotides, while RNA consists of ribonucleotides. Clear? And now, dear students, the structure of a nucleotide, that is very, very important. So, what is a nucleotide? So, nucleotide is a structure that is made up of 3 parts. तो न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1,
is ribose. A pentose, that is a monosaccharide. Hopefully आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे. मोनोसैकेराइड हमने पढ़ा था, ठीक है. अ पेंटोस मीन्स के 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड इन आरएनए. तो राइबोज किस में होगी? आरएनए के अंदर. इसी की काउंटर पार्ट sugar, that is in the DNA, that is called as deoxyribose. A pentose sugar in DNA. इसी वजह से तो हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए को. क्लियर? तो पहले इनका स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता चलो. सो राइबोज हमने देखा था, राइबोफ्यूरानोज, ये 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनता है. So this is ribose. Clear? And here is the carbon numbering. This is carbon number 1, 2, 3, 4, and 5. Clear? That is present all in RNA. But as far as the DNA is concerned, the structure is same except one difference. Okay, dear students. So this is carbon number 1, 2, 3, 4, and 5. तो डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा जाता है? डीऑक्सी, जैसे आपने पढ़ा हुआ डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है. इसी तरह से डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो डीऑक्सीराइबोज यानी कि राइबोज में से ऑक्सीजन का एटम रिमूव हो जाना. सो डियर स्टूडेंट्स, एट कार्बन नंबर 2, यहाँ पर नॉर्मली राइबोज में क्या है? OH ग्रुप है, ठीक है. तो यहाँ से ये O जो है यानी ऑक्सीजन एटम, ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ रह जाती है हाइड्रोजन. सो as there is, as the oxygen has been removed, so this is called as deoxyribose. है तो राइबोज, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम कहाँ से रिमूव हुआ डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम कार्बन नंबर 2. तो ये वाली शुगर मौजूद होती है डीएनए के अंदर. सो दिस इज deoxyribose. इट इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए. होपफुली कंसेप्ट क्लियर हुआ ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का. दैट द फर्स्ट कंपोनेंट, द शुगर. Now the second component is phosphate group. So that was the first component. Now the second, phosphate group. So dear students, phosphate group, it comes from, जिसको हम लिखते हैं, abbreviate करते हैं ऐसे, PO4. Clear? So that is the phosphate group. So it comes from
phosphoric acid. And what is phosphoric acid? H3PO4, or its structure is this is P, A की P आ गया, ठीक है? This is OH, OH, OH and double bond O. तो एक P पूरा हो गया, 3 हाइड्रोजन, 1, 2, 3 and O4, 1, 2, 3, 4. So this is the structure of phosphoric acid. जहाँ से क्या हासिल किया जाएगा? Phosphate group. Clear? Now, the third structure is nitrogenous bases. Nitrogenous base. So nitrogenous base, it is of two types. दो तरह की होती हैं, dear students. Purines and pyrimidines. The purines, they are double-ringed nitrogenous bases. That is just the dummy. While pyrimidines, they are single-ringed nitrogenous bases. Clear? In purines, it includes two bases, adenine and guanine. Clear? While pyrimidine, it consists of three. So one common is cytosine. Next is uracil and thymine. And remember one thing more, that uracil is present only in RNA instead of DNA, the thymine, while thymine is present only in DNA in place of uracil. Clear? So ये nitrogenous bases. Now, I'm going to draw a nucleotide which is sketched in our book, that is ATP, adenosine triphosphate. The structure of adenosine triphosphate is short question में इसका sketch आ सकता है. The sketch of ATP, that is adenosine triphosphate, the energy currency, and you have read in the previous classes as an example of a nucleotide. That is a nucleotide. तो न्यूक्लियोटाइड डियर स्टूडेंट्स किस किस से मिलकर बनी है? नंबर 1 शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप एंड नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस. इनमें से एक होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी गो. This is, I'm going to draw the pentose sugar here. So that is ribose. आप भी साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको भी ड्रॉ करना इजी लगे. So these are important. Here is H and here is CH2OH. तो यहाँ से जो OH है वो आगे जो कि कार्बन नंबर 5 है ये फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ का जो OH है ये बॉन्ड बनाने में काम आएगा with the nitrogenous base. Clear?
So that is adenine, the nitrogenous base. और इसकी यहाँ पर हाइड्रोजन जो थी वो इसके OH ग्रुप के साथ मिलकर वाटर रिमूव हुआ एंड दैट गेट्स अटैच्ड. इनकी नंबरिंग भी साथ ही कर दूँ. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So that is the structure of adenine. This is ribose और ये पांचवी कार्बन. This is carbon number 1 2 3 4 and 5. और पांचवी कार्बन पे अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स. So these are 3 phosphates attached to this carbon number 5. And over here आप देख सकते हैं ऐसे मैंने ये इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है. So this is called as tiled bond. Tiled bond. It is present between these 2 phosphates. Clear? So this is the structure. These are 3 phosphates and that is ribose and that is adenine. तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर अटैच है? एट कार्बन नंबर 1. फॉस्फेट्स कहाँ पर अटैच हैं? एट कार्बन नंबर 5. ठीक है. सो दिस होल स्ट्रक्चर from this end to this end, that makes adenosine triphosphate, clear? Or ATP. That is an example of a nucleotide. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे DNA को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.